हेलो एवरीवन। आई नो ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। पहले मैं कैटिया डिज़ाइनिंग की वीडियोस अपलोड कर रहा था बिकॉज आई वाज द मैकेनिकल इंजीनियर एक्चुअली एंड आई वाज रियली पैशनेट अबाउट द डिज़ाइनिंग पार्ट, बट या आफ्टर switching the career to the data analyst, yeah, you heard right, I switched the career from the mechanical engineer to the data science domain, where I am by where my major currently role is related to the Power BI and the SQL. And yeah, currently I'm also involving in the Azure and Cosmos DB part as well. Mm, and the journey actually was not easy. So this is the transformation journey, and I know like how many challenges we generally faced. So I am again starting this channel is because the challenges which I faced, I don't want anyone else to face all those challenges. सो मैं अपना एक्सपीरियंस अपनी लर्निंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर द यूट्यूब आई विल ट्राई टू शेयर. I will try to give all my best for the related to the Power BI. I will try to upload every videos continuously on the YouTube. If get delayed, so sorry for that. And second thing is keep supporting. Because if you support, then this will reach to someone who really need it. And I am not a professional editor, so वीडियो में इतनी अच्छी एडिटिंग तो नहीं होगी, बट या आई विल ट्राई कि कंटेंट जो वो टॉप नॉच होना चाहिए. So we'll work on that. Thank you so much everyone. And from today or tomorrow I will start uploading some content, like I will start with the Power BI, so after that we can go for the SQL and Python as well. So first we will cover the Power BI from start to end. mm, I am thinking forward, like what are my plans. Let me tell you, that will be, I will try to cover all the basics of the Power BI, like which are really needed, like for the data understanding, like what industry really need. So I will talk only those, like I know theoretical आप कितना भी पढ़ लो, बहुत बहुत ही ज़्यादा है, कभी मतलब लिमिट नहीं है उस चीज़ की. बट मेरा जो मेन गोल होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जिससे जिसको सीखना है पावर बीआई को और जो इंडस्ट्री में यूज़ होगा उसके लिए वो बेनिफिशियल हो. तो मैं उसी के हिसाब से जो बेसिक चीज़ें हैं बेसिक से लेकर चलूँगा. और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी, एक क्या मैं मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि लाइक हाउ we are going to build the dashboard, how we need to think while creating a dashboard. I also worked on the Figma, but I don't have major hands on Figma, but whatever I know I will to try to explain that as well, so you can also create the UI UX design as well. So just subscribe, so अगर अगली वीडियो आती है तो फिर आप लोगों को पता लग जाए और आप इस जर्नी का पार्ट बन सकें. थैंक यू सो मच.